Hello students, how are you all? I hope you all are fine, safe and healthy. I'm your teacher Sara Shakil and I welcome you in your science class. Yes, before we start our new topic, let's recap what we have learned in our previous class. Yes, cell. All organisms, plants and animals are made up of tiny units called cell. लैटिन वर्ड सेला मीनिंग स्मॉल रूम, ये एक लातीनी लफ्ज़ है सेला जिसके मतलब है छोटा कमरा। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था और उन्होंने अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप पर सेल को देखा था। इन दिस स्लाइड यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ सेल। इन दिस स्लाइड you can see tissues. And what are tissues? A living tissue is made up of similar cells. All tissues work together to do a particular job. Cells of the same type usually group together to form tissue. Plants and animals both have tissues. Yes, unicellular organism. Uni means one, cellular means cell. One cell means single-celled organism. We can see them under microscope. Examples are amoeba, euglena, paramecium and chlamydomonas. Yes, next slide is multicellular organism. Multi means two or more. Cellular means cell. Examples human being, land plants. Multicellular organisms are organisms that consist of more than one cell. Yes. Organs. Cells and tissues are organized into larger body parts called organs. In this slide you can see many organs. An organ is made from a group of different tissues which work together to do a particular job. Yes, this is our new topic and from the book you can see page number 6 and 7. Yes, organ system. A group of organs that work together to carry out certain job or function is called an organ system. Here you can see many organs. Yes, in this slide you can see cells. Many cells makes tissue, many tissues make organ and many organs make organ system. In this slide you can see this picture. Yes, let's see how many organs are there in human system. Skeleton system, excretory system, circulatory system, nervous system, digestive system, respiratory system. Let's see what skeleton system is. In this slide you can see a picture of skeleton system. And there are many parts. Bones and skulls are the main parts of this system. Let's see the definition. The skeletal system supports the body and protects certain delicate organs. अगर हमारे जिस्म में skeleton system ना हो तो हमारी बॉडी या हमारा जिस्म सिर्फ जिस्म का लोथड़ा होगा और वो मूव नहीं कर सकेगा। बॉडी में मूवमेंट के लिए हमें स्केलेटन सिस्टम की ज़रूरत होती है। स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट एंड इट फ्रेम अप्स आवर बॉडी। यस, लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट सिस्टम इज excretory system. Main organs are 2 kidneys. Let's see the definition. The excretory system
removes waste chemicals from the body. हर ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई सिस्टम होता है जिसके ज़रिए जिस्म से वेस्ट मटेरियल निकलता है. हमारी बॉडी में भी ऐसा ही सिस्टम है जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. Yes, let's see next system, that is circulatory system. Yes, main organs are heart and blood vessels. Definition is, the circulatory system moves blood around the body in order to transport digestive food, oxygen, carbon dioxide, urea, hormones and heat. सर्कुलेटरी सिस्टम से बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है यानी गर्दिश करता है. ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ब्लड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी बॉडी को फूड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन फराहम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ले लेता है. हमारे जिस्म के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज़रूरी है. और सर्कुलेटरी सिस्टम की दो टाइप्स होंगी, आर्टीरियल सिस्टम and venous system. Yes, next system is nervous system. The main organs are brain, spinal cord and nerves. Let's see the definition. The nervous system controls many of the body's activities. Nervous system का काम क्या है कि हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. एग्ज़ाम्पल ये कह सकते हैं हम कि जब हम वॉक करना चाहते हैं तो ब्रेन हमारी लेग्स को कमांड करता है कि वो मूव करें. यस, नेक्स्ट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम. लेट्स सी व्हाट डाइजेस्टिव सिस्टम इज़. द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन food materials into a simpler form that can be absorbed into the blood. Main organs of digestive system are stomach and intestine, and here we have two type of intestine, small intestine and large intestine. Digestive system हमारे food को हज़म करता है और food को smaller parts में divide करता है ताकि blood में शामिल हो सके. क्या blood में शामिल हो सके? Food. Yes, next is respiratory system. Respiratory system puts oxygen into the blood and removes carbon dioxide and water vapor. Yes, main organs of respiratory system are lungs, and we have two pair of lungs in our respiratory system. Yes, लंग्स ऑक्सीजन को ले लेता है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है. यस चिल्ड्रन, मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको पसंद आया होगा. यू कैन आफ्टर दिस यू कैन रीड पेज नंबर 6 and 7. So it will be helpful for you. Yes, next slide is home task. It's time for your homework. Yes children, you have to do 2 questions. Question number 1 is, name the organ systems and write their definitions. You can see the definition in this slides also as well as in your book also. Question number 2, label the diagram of an animal cell given on the book, page number 12. Book के ऊपर page number 12 में आपको label करना है animal cell. Yes children, thank you for listening this, and I want to tell you about this that you have to subscribe this channel so you will get all the information, all the lessons जो कि upload हो जाएंगे वो आपके पास directly आ जाएंगे. Thank you children, stay home, stay safe.